Assalamu alaikum everyone, this is Qazi Abdul Momin with another episode of Met the Grad series presented by Con Society. And today I have a very special guest with me, Mr. Mohsin Khan. He's a commercial analyst at Every Dennison, Frankfurt, Germany. कैसे हैं मोहसिन भाई? बहुत 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 शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू गाइस? Fine. We have Mr. President as well, President Con Society, Tala Khalid with us. Tala कैसे हैं? अच्छा मोहसिन भाई, पहला सवाल आपसे ये है कि आप क्योंकि फर्स्ट बैच से हैं, तो व्हाट वाज योर थिंकिंग व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड, लाइक इट वाज वेरी न्यू फील्ड, सो यू आर गेटिंग इनटू इट, सो व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वर योर थॉट्स एट द मोमेंट? That's a very good question to start. I would say initially what happened is that जब 2013 में हमारे एडमिशन हुए एनईडी के, तो बहुत सारे लोगों के मार्क्स तो क्लियर हो गए, बट दे didn't had enough percentage. Approximately 77-78% के बाद एनईडी was like closing its main fields. तो मेरा ये था कि I cleared the test but didn't got the fields which I wanted. But fortunately, NED started three initial fields, and they were like computational finance, applied physics, and industrial chemistry. And over there, I learned के computational finance के बारे में. Then I visited the department, I visited chairman and teachers and asked about them कि भाई क्या field है, क्या है. Then I consulted a couple of other people, and then I realized कि यार ये interesting है, looks very nice. Finance है, maths है, statistics है, and in the end it's about computer applications as well. So I decided कि let's give it a try and let's see about what we can study about it. So मैंने उसका थोड़ा सा prospects पढ़े. I studied about finance, I have already studied about finance in my O levels. तो मेरे लिए बड़ा एक interesting ये था, and then I started. And इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, कुछ चीज़ें मुश्किल थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, क्या होना है. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स मेड सेंसेस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन. तो काफ़ी डिटेल में आपने जो है इस बारे में बता दिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोहसिन भाई ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे अनसर्टेन होते हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, बेसिकली कंप्यूटेशन फाइनेंस को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फील्ड्स: मैथ्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर. So you apply the knowledge of finance, maths and statistics by the computer applications. इसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अबाउट एक्विटी फाइनेंसिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल. एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली. तो आपकी एक बहुत अच्छी ग्रिप होती है ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एज वेल, ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज वेल, एंड देन यू आर स्टडिंग अबाउट मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. बेसिकली मैथ्स तो हर जगह ही इन्वॉल्व होती है. And the best part is that you are also applying these into the wider application, which is very very important for our society and very important for the professional growth as well. कि आप इन चीज़ों को सीखें और इनको इम्प्लीमेंट कर सकें. सिर्फ किताबी नॉलेज होना अच्छी चीज़ है, बट इट्स नॉट इनफ. तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें. एंड दिस इज़ वेयर कंप्यूटेशन फाइनेंस कम्स इन. And we do, I would say, have an edge with the other graduates as well, because we are studying in depth about maths as well, statistics as well, which I believe कि जो CA के students ACCA होते हैं, they don't study a lot about maths and stats. So that really helps us in many aspects. So this would be my answer, that computational finance really helps you to grow your mathematical skills and apply those skills in your in the finance area as well. तो मुझे भी आपने कहा कि किताबी बातों के अलावा भी स्किल्स आपकी मदद मिलती है. तो आपने अपनी ग्रेजुएशन लाइफ में इतना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया, चीज़ों में पार्ट लिया, तो उसी हवाले से अगर आप और अकाउंट्स के हवाले से अगर आप Sure. I would say I have been a part of many societies during my university. School, college के ज़माने में भी, whether it's about sports and about co-curricular activities, I was always a part of this. मेरा ये था कि I was working in a couple of different societies, and that really helped me. I mean, सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं, पर्सनल ग्रोथ भी आपकी बहुत ज़रूरी होती है. उसमें ये होता है कि आपका कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट, इट रियली हेल्प्स यू अलॉट. आपको समझ आता है कोई इंसान आपकी थिंकिंग का होगा, कोई बहुत ही मुख्तलिफ सोच रखता होगा, तो आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं. अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, बुरा एक्सपीरियंस भी रहता है, बट इन द एंड यू गेट सम वैल्यूबल फीडबैक. So that was very good. And regarding cons, I would say cons की जर्नी बहुत अच्छी है. I would definitely like to give credit over here to Sara, Asim, Manzoor and Noor. They were the first initial ones who really worked very hard for this. Since year one we were trying our best कि हम अपना एक नाम बना सकें यूनिवर्सिटी में, बताएं कि हम exist करते हैं. Because to be very frank, many of the people didn't know कि such department exists and these things.
बट इट रियली हेल्प अस फर्स्ट ईयर से हमने मेहनत की है जाते जाते थर्ड ईयर के एंड पे ही फाइनली फाउंडेड द कॉन्ट सोसाइटी and it was a very good journey. I was also a part of the directorate, so I was the head of event management over there. We successfully managed to implement 1 to 2 events, and that I believe was a very good success for me as well, because after that we did the promotions. हमने लोगों को बताया कि this society exists करती है, these are the events we were conducting, and it was really beneficial for the society. So Mohsin bhai, you are currently working as a commercial finance analyst at Every Denson. So something you would like to tell us about your job, what basically you do there? Yes, so मेरा काम basically as a commercial finance analyst है. So what Every Denson does is that they make basically these जो tags होते हैं आपके कपड़ों में, अब जो barcodes होते हैं वो बनाते हैं, and they have different lines of business as well. So मेरा काम ये होता है that I need to make sure कि दुनिया में जहाँ भी हमारी sales हो रही हैं, we need to make a record of it, how much sales we did, what was our forecast, what was our budget, and how much is the variance. And then once the week or the month is done, then we see, okay, our forecast, let's suppose 100 million tha, we made a sale in 1 month of 80 million. So we had a variance of 20 million negative. What happened over there? Kyun ye hua? Is it because of the volume? Is it because of the price? And then we do the analysis for that. And then we see, okay, kaun se region mein kya cheez thi, kami thi. Then we focus on those strategies कि अच्छा next month हमने इस चीज़ को और बेहतर करना है. Then we work on the next month's forecast. इसी तरह हम साल के एंड में basically it's called AOP, annual operating plan, एक बजट बनाते हैं that will be focusing on the next year. हम हमारी ये sales होंगी total and this is what we'll be targeting. तो इसमें मेरा ये काम. Basically, you are the think tank behind driving the force to generate more revenue for the company. And to analyze more revenue, okay, where is the revenue coming from, where are the exactly sources, where are the areas where lacking behind, and उसमें हम क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, कैसा forecast हम अपना अच्छा implement कर सकते हैं, because you know during COVID things have been changing a lot, so इसकी वजह से it was like I would say it varies, but major focus is on budget, forecast, plan. So, how do you think students of computational finance compete with outside the world? Very good. A couple of things we need to learn, and there is no harm in learning, I would say. I believe computational finance students के पास बहुत अच्छी knowledge होती है regarding finance, economics. Students at the point which will be hearing this ये समझेंगे कि नहीं हमें इतना नहीं पता, but that's not true. जब आते हैं whenever a new graduate enters into the market, कोई expect नहीं करता कि जी आप बहुत ही professional हो. You should be professional with your work ethics, ठीक है, आपको काम पता हो, and you should have the motivation to learn, and आपको ये जैसे जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मुझे काम दीजिए, I want to learn about that. So that's the thing कि students के अंदर ये चीज़ है. हमारे things which they could improve upon is I would say mostly कि वो अपनी personal growth पे, ठीक है, कि किस तरह बात करनी है, किस तरह communicate करना है, किस तरह knowledge को implement करना है, and that is I would say the main area which students need to learn, and if they do this it will be really helpful for them, I would say. अच्छा मोहसिन भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, आपसे एक ज़रा मतलब मुश्किल सवाल है. ये है कि आपने बद्री में एज ए एक्चुअरियल एनालिस्ट जो है वो ज्वाइन किया था आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम CF. सो व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड टूवर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंस एंड to go abroad like something? That's an interesting one. I remember when I graduated, I think after 1 week I got an internship in Badri, and I started working over there. The first initial month was very good, and they had a very good response. मुझे भी बहुत अच्छा लगा काम. But after 3 to 4 months, approximately 4 months after that, I realized कि मुझे उसमें शायद मज़ा नहीं आने लगा. Although there were 3 other people with me and in our batch, जिन्होंने साथ ही किया था, both of them are working over there as well, but I left. इसका एक मेन रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस साइड रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहता. माई फोकस वॉज मेन ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. तो वो एस्पेक्ट एक्चुअल साइंसेज में मुझे इतना मिल नहीं रहा था. आई वुडंट से कि एक्चुअल बुरी फील्ड, एक्चुअल इज़ अ वेरी वेरी डिमांडिंग फील्ड. इट्स वेरी nice, it's a lot of hard work, but it's very good pay in the end as well. But for me it was like a little bit different what I had initial plans. Vibe match नहीं कर रही थी. Kind of, you can say that. And second thing was that I had actually planned for my further studies. तो उस वक्त तक मेरा एडमिशन आ चुका था, तो then मेरे पास just couple of months ही रहते थे. Then I had to do my other things as well, and IELTS and these things. So I was busy in there, so that's why I thought, okay, let's leave this and let's start with a new path as well. So, but now it's going good for me, I would say.
सो मुझे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आई गेस आप Yes. की है, तो आपने जर्मनी क्यों सोचा है? व्हाट मेड यू थिंक कि जर्मनी नहीं जाना चाहिए मुझे ग्रेजुएशन के लिए? Yes, actually, this I would say it depends upon your personal idea as well. For me, Germany at that time was and still is like Germany is basically economic power of Europe. Okay, Germany is the best thing about Germany is that education is almost free. So hardly up like per semester you're paying 200 or 300 euros. एंड उसमें आपको एजुकेशन भी है, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी है. दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज अबाउट रिसर्च वर्क. सो जर्मन्स आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड हाउ डू यू सी अपना आइडियाज़ लाने के ऊपर. दैट वाज द मेन आइडिया कि मुझे जर्मनी में मैंने फोकस किया. सेकेंडली ये था कि आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा सा टाइम बाहर रहूँगा इनिशियली एंड एट दैट टाइम अदर कंट्रीज़ लाइक हैव डिफरेंट वीज़ा इशूज़. जर्मनी के बहुत आसान था. जर्मनी वाज लाइक कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें एंड देन विल गिव यू 18 मंथ्स जॉब सर्च वीज़ा. 18 महीने में आप जॉब सर्च करें, आपको जॉब मिल जाती है, यू कैन स्टे इन जर्मनी एज वेल. सो दोज वर लाइक द मेन आइडियाज़ आई वुड से. तो अभी जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो बच्चे पास करने वाले हैं, उनके भी जो है आगे आइडियाज़ होते हैं कि अपने आगे Yes. करने के लिए. तो आप उनको क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है कि जर्मनी जाने के लिए इस आइट्स नेसेसरी. Acha, these are two questions. I divide them. Firstly, is that I would really recommend whether it's a boy or a girl, they do consider an option of going abroad, at least for exchange semester or so. It really helps you broaden your mind. आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इसमें. आप खुद से चीज़ें करते हैं, यू बिकम इंडिपेंडेंट. आप खाना भी खुद बनाएंगे, आप ग्रॉसरीज भी खुद लाएंगे, आपने कुछ चीज़ें भी मैनेज करनी है, आपने स्टडीज़ भी करनी है, इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी है. सो दैट्स अ वेरी वेरी टफ लाइफ बट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. सो ज़रूर इसको टारगेट करें वंस यू ग्रेजुएट. उससे पहले ही सोचें कि मैंने करना क्या है. स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब एज वेल. माई रिकमेंडेशन नॉट फॉर एवरीवन इज़ दैट के एटलीस्ट हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ 6 months to 1 year बिफोर गोइंग फॉर मास्टर्स. सो एटलीस्ट यू नो कि आपने किस एरिया में जॉब कर रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग है. सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सेकेंड थिंग रिगार्डिंग आइल्स इट डिपेंड्स. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स नहीं मांगती, दे गिव एन एग्जाम्शन, सो वो भी हो जाता है. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ अबाउट कि आप बहुत सारी आपकी जब व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनईडी आपको एक लेटर देगा. इट्स कॉल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर विच विल स्टेट दैट यू स्टडीड ऑल ऑफ योर कोर्सेज इन इंग्लिश एंड देन यू कैन बेसिकली यू कैन बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट. So it depends. Sometimes the German consulate they require IELTS, sometimes they don't require IELTS. So it depends on person to person. But one thing I would just like to quickly mention is that IELTS कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. It's very very easy thing. आसान है, easily समझ सकते हैं, easily जिसने graduate हुआ है he can easily implement IELTS. So अच्छा मोहसिन भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा. थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताना चाहें, कैसी गुजरी थी ओवरऑल. यू हैड फन इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ एज वेल. आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव. yes. उसके बारे में थोड़ी सी Yes. उसके बारे में थोड़ी सी University life was very interesting. To be honest, I really enjoyed. I was not a backbencher, but I still used to have really fun in the class, and I would say good in studies as well. CGPA भी अच्छी आ रही थी, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, खेलकूद भी चलता रहता था, हंसी मजाक भी था. So it was very interesting, and I would really recommend कि भाई do enjoy your time in university, because once you graduate from university, you won't have this thing. हमें याद है हम क्लास में सर समद या सर तौकीर को बोल देते थे कि सर बस आज इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना. बट व्हेन यू विल गो इन द जॉब, आप अपने बॉस को ये नहीं कह सकते नहीं इससे ज़्यादा मैंने काम नहीं करना. तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग एंड ड्रास्टिक चेंज. सो यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड से सोसाइटीज़ में काम करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ खाना एंड वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड दीज थिंग्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. एनी पीस ऑफ एडवाइस जूनियर्स आर लिसनिंग टू यू? एनी पीस ऑफ एडवाइस आई वुड से अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करें. CGPA डज मैटर. आई वुडेंट से कि सिर्फ यही CGPA ही होती है, बट फोकस ऑन योर पर्सनल स्किल्स एज वेल एंड डू एंजॉय योर टाइम. डोंट बी लाइक ऑलवेज पैनिक्ड एंड इन फ्रस्ट्रेटेड. डू एंजॉय योर टाइम. आपने अपनी CGPA मेंशन करी कि CGPA भी अच्छी आ गई थी जी. काफ़ी तरह ये रहता है कि स्किल्स वर्सेस CGPA, तो आप क्या जानना चाहेंगे कि does CGPA really matters? और देखिए, आई वुड से इन मैनी ऑफ द केसेस it's you can say 50-50, but I would definitely focus more on skills. CGPA आपको hardly एक फर्स्ट जॉब लैंड करने में हेल्प कर देगी, but after that it's your skills what takes you up to the ladder. So skills हमारे ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कि जिनकी CGPA I would say
high नहीं थी, like they were not the top 3 or top 10, but still they managed to get the job for the very first time, and that was very good part. So focus on your skills. CGPA also does matter. It really helps you if you're going in academic career. So if you're going for masters and then for PhD abroad and whatsoever, so ये आपको ज़रूर help करेगी CGPA. आप जर्मनी में रहे हैं, I guess, चार साल, तो 4 साल आपको जर्मन लैंग्वेज का बैरियर आपको फेस करना पड़ा बातचीत में? और Yes, it does. German language, I would say no doubt it's very difficult. जर्मन के लिए बड़ी मजाकिया एक कोट कही जाती है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न जर्मन, ज़िंदगी छोटी है जर्मन सीखने के लिए. तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ. आई वुड से आई एम एट एन इंटरमीडिएट लेवल, नॉट वेरी वेरी प्रोफेशनल इन दिस, वेरी फ्लुएंट इन दिस, बट आई एम स्टिल लर्निंग इन दिस. बट आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि दे फोकस ऑन इंग्लिश, कि नहीं हम इंग्लिश में ही करेंगे, काम आपका चल जाएगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हर वक्त नहीं चल पाएगा. इट्स सिमिलर लाइक कि पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट ज़्यादा लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, बट हर राह चलता बंदा इंग्लिश नहीं बोलता, उसको उर्दू समझ आती है. सो फॉर योर पर्सनल एंड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, कि आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म रहना है या सर्वाइव करना है, तो यू शुड फोकस ऑन जर्मन. एंड इसका बेस्ट हल यही है कि आप इंटरेक्ट करें लोगों से. जितनी बातचीत करेंगे, जितनी वोकैब आपकी इंक्रीज़ होगी, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा. आई गेस वी आर डन फॉर टुडे. मोहसिन भाई, आपने बहुत डिटेलली आंसर किया सारे क्वेश्चंस को, सो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर opportunities as well. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेक 1 minute if I can. So yeah, I would say do work with your do connect with your seniors whenever you get the chance. आप मुझसे कांटेक्ट करें, बहुत सारे अदर्स जो भी हैं सबसे कांटेक्ट करें. They'll really help you. एंड पॉसिबल हो सकता है कोई देर से रिप्लाई करे, कोई लेट, जो भी हो, बट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड वर्क विद योर सोसाइटी. काउंट्स एज वेल. काउंट्स इज डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब, टू बी ऑनेस्ट. जब हमने स्टार्ट की थी सोसाइटी, इट वॉज बेसिकली वी स्टार्टेड इट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड फर्स्ट स्टेप यू कैन से ऑलवेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन. नाउ इट्स अपॉन यू. योर डायरेक्टरेट एंड योर members are working really hard, so focus on it. Collaborate with different people, work, bring new ideas, share those ideas with your seniors as well, with your members as well, and best of luck for your future. And in case you need anything, you can always contact me on LinkedIn or my email. I will share it with you. So thank you so much, guys. Thank you. Thank you, everybody. We will be here with another episode of Met the Grad series next time. Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. एक मैंने वो क्वेश्चन बनाया रैपिड फायर का, तफरी वाला थोड़ा. Sure. Go ahead, bhai. Go ahead. Please. एक मिनट स्टॉप कर दीजिए. मोहसिन भाई, ये फन क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्स की तरफ से एक इनिशिएटिव है, तो इसका आपको सही जवाब देना है. ये बेसिकली ये अराउंड है आपके बैचमेट के दोस्तों के हवाले से और मेमोरीज के हवाले से. सही है. सही. सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो दोस्त जो हर प्लान में ऑन करता हो और बाद में उसका ऑफ हो जाता हो, कि अम्मी या अबू नहीं मान रहे. ताश से डेफिनेटली. अच्छा, वो स्टूडेंट, वो आपका बैचमेट का बॉय जो पढ़ाई के अलावा सब करने आता हो, खेल कूद, पढ़ाई के अलावा सब करने आता हो. या आई वुड से मोहतशिम भाई. सही है. अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स? शाहजेब मोहतशिम. ऐसा ही कोई एम्बेरसिंग मोमेंट? शाहजेब के साथ बहुत सारे हैं. आई वुड से स्पेशली मस्जिद की तरफ, और एक बार हम वॉशरूम जा रहे थे, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बस इसको यहीं तक रखते हैं. चलिए सही. अच्छा, यूनिवर्सिटी की फर्स्ट क्रश आपकी, मोहसिन भाई? यार मैं शादीशुदा हूँ, तो अब ऐसी बातें नहीं करो. अभी शादी हुई है. अच्छा, आपके 4 साल में बेस्ट मोमेंट? पिकनिक्स, आई वुड से दोज वर रियली नाइस. बहुत मज़े की थी. एंड एनुअल डिनर. सही है. एनी एडवाइस फॉर एनी ऑफ योर बैचमेट जो कि थोड़ा एटीट्यूड में रहते थे, मुंह बना के रखते थे, अब क्या कहना चाहते हैं कि भाई क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें भाई, बात कर लेते उस वक्त तरीके से. सही है. अच्छा, बेस्ट स्पॉट यूनिवर्सिटी का कहाँ पे आप लोग जाते थे? आई वुड से एसएफसी में. ये मत समझिएगा लड़कियों के सेक्शन के अंदर बाहर. सही. और बेस्ट फूड कैंटीन का क्या आप लोग खाना पसंद करते थे? या मुझे चिकन रोल बहुत पसंद था एसएफसी का. मैं बहुत शौक से खाता. अच्छा, कितने रुपए का चल रहा था उस वक्त? यार बहुत पुरानी बात हो गई ये तो. आई थिंक 40 का होगा या 30-40 रुपये का होगा. 50. सही, 80 रुपये का हो गया अभी.
सही। अच्छा एक स्पेशल क्वेश्चन आया मोहतशिम भाई के हवाले में, कोई बात ज़रा उनसे, हमारा थोड़ा अच्छा दोस्ती आ रही है हमारी। अच्छा, मोहतशिम के बारे में, मोहतशिम के साथ मोहतशिम मेरे घर के बहुत पास रहता था, तो हम लोग अमूमन कैलकुलस मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, मोहतशिम मुझे पढ़ाता था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट जब मोहतशिम से बोला अच्छा यार ये पढ़ा दो, तो हिज फर्स्ट थिंग वाज अच्छा लेट्स सपोज y इक्वल्स टू 2 to the power x, एंड हर क्वेश्चन में उसका बस यही होता था और बस उसको इतना ही आता था, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पढ़ाया इसने कभी। सही। अच्छा, और एनी एडवाइस फॉर गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे यार, हमारे एक बैच में तो गोल्ड मेडलिस्ट आई थिंक 3 लड़कियां ही थी। आई थिंक वन ऑफ देम इज प्रॉब्ली वर्किंग, फॉर द अदर 2 आई डोंट नो वेयर दे आर, बट जहाँ रहे खुश रहें। सही है। और आपके बैच में कोई जीनियस स्टूडेंट, पढ़ाई में इतना ना हो मगर बहुत जीनियस हो, और आप देख रहे हो अच्छी जगह पे भी अभी? यार सब नॉर्मल थे, आई वुड से कोई एक्स्ट्रा जीनियस है। आई वुड से ऑन वाज वेरी गुड, वेरी नाइस इन स्टैट्स एंड बड़ा हाजिर दिमाग था, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह एट द मोमेंट। सही है मोहसिन भाई। फिर आखिरी सवाल के जूनियर्स को और हम लोग जैसे जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के 4 साल हम कैसे गुजारें? But I would again say कि have the maximum fun you can. Do work hard, do work smart, I would say, and focus on your skills. सीखें भी and enjoy करें, अपना best time enjoy करें. Go for picnics, go for events, and do जैसे हमने की थी barbecue की थी, these parties and these things. Do these together and do celebrate the last days of your university, like 4th year. We celebrated basically costume day and sports day and professional day and so on, and enjoy the best of your time in university. अच्छा, और एक और लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि देखा जाता है कि बैच में 6-7 लोग तो इनिशिएटिव लेते हैं, इन सब के लिए बाकी सारी क्लास सो रही होती है। Yes, तो always. जो कि हम लोग ने बहुत फील किया है, हमारे साथ है ऐसा। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही था। सही है। अच्छा, और क्वांट्स के हवाले से हम लोगों के बारे में कोई कमेंट्स? Yes, I would say Cons is doing again a very very good job. Do support your society. As I mentioned earlier, when we started, it took us approximately 3 years to at least start to get permissions and these things. Cons is doing a very fantastic job. Work with them, share your ideas, and don't just focus on any particular title. कि इस title का बंदा है तो वही काम करेगा. Being a member, you can also contribute to the society, and I would say best of luck, and do keep in touch with your seniors. Probably 50% of them will reply, but at least they will. So do ask them, do come, like whenever you need to ask them, go for them. थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. आप आए। बहुत शुक्रिया।